start, Samira? Yes, please. By standing up. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr wa tawasaw bis sabr. I swear by the declining day, man is at a loss, save those who have faith and thus saleh actions that Allah loves. And then invite people to haqq, invite people to truth, invite people to fact, and then comes out to be steadfast. This is not, usually when we assemble, I think there is some speaker is coming. He'll say on some topic and he'll give a good talk. एक lecture हो जाएगा, बयान हो जाएगा, सुन लेंगे. This is the usual mindset of saying some good things to learn. We are not going to have I'm not a motivational speaker, nor a scholar, nor a preacher, nothing. Mine is not a talk. I call it as a life coaching. So we'll have, so there is no talk. So there will be only an interaction, they call it dialogue. It's not a monologue. It's not one-way talk. So we are going to engage in a conversation. We'll have an interaction. Where we will interact together. And then in the conversation we share each other. And then we'll learn. So that is how our process is about. Each one has knowledge. Each one has vast experiences. Is it not? Everyone has the knowledge. So knowledge, this workshop or this whatever talk is not gaining knowledge or adding knowledge to you. Nothing. Already knowledge is there. So we are not going to add knowledge to anything. In this conversation, when we are having, the basic principle is that I am not here to impose my opinion on you or my experience something. No. So basic principle what we are going to follow is whatever I am speaking or talking, I am not asking you to accept what I am saying. First thing. ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहे हैं मैं मानो. There is nothing to accept. You do not have to accept. Next thing also, you don't have to agree. Yes, what you say, I agree. We agree. I'm not asking you to agree to whatever I'm saying. I'm also not to believe in what I'm saying. So inside that, we are creating a conversation and see, try out whatever he's saying. Try करना है. देखिए चलो बोल रहे. Let me try. When you try, what happens is, when it's beneficial, you try and you find it good, you take it. So this is the conversation we will have together. So usually now, the question is now we will have, it is not a one perspective, this one है, our context, हमारा context of my speaking, my this thing, will be from a perspective. So, perspective of Allah, perspective of God. That is the perspective we are going to talk. So that is where we are going to engage ourselves from the conversation. From Allah's perspective, Quranic perspective, we are going to have. Now, we are sitting down together from Quranic perspective, we say. So the Quran is a book.
So it's not about knowledge there. It's nothing about that. The Quran is a book of wisdom, like a hikmah. So now, that's what we are going to engage into. Wisdom. So our education is on about wisdom. And the Quran is talking about wisdom. So we'll go and see inside that what wisdom. So we'll have a query because I had laptop, I समझा presentation वगैरह करने का कुछ भी नहीं है, ऐसे ही शुरू करना पड़ा. क्या करते हैं? There's nothing. Allah will check whatever it is, whatever time we spend. There's nothing that you have to add on. Even one thing, if you get it, your life will change. So from the perspective of Allah, we are going to solve. अब इसमें एक क्वेश्चनिंग आता है, क्वेश्चन आता है. तो पहला ये क्वेश्चन अपने आप में करना है, लेट्स एक्सचेंज द क्वेश्चन. व्हाट डू आई वांट? मुझे क्या चाहिए? Is it not? So let's engage into that one question and we'll exchange the answer. From each perspective, you can say what you want actually. There's nothing right answer, no wrong answer, nothing. Now you will answer from each perspective and that perspective is valid. Is it not? So the question itself is so vast, we will कौन से perspective answer करेंगे? क्या चाहिए तो? है ना? बच्चे भी छोटी बच्ची को क्या चाहिए? तो चॉकलेट चाहिए, मम्मी कहती है. बच्चे को चॉकलेट ही चाहिए, टॉय चाहिए, है ना? लेकिन ये क्वेश्चन सबसे very deeply from the अंदर से है कि चीजें से let us dwell into it and ask yourself. इतना जिंदगी गुजार रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, everything we are doing, ultimately what do I want? क्या चाहिए? कमान कभी कभी सोचे क्या इस चीज को? नहीं सोचे. From the perspective, अब चाहिए तो कभी जॉब चाहिए, ये चाहिए, शादी चाहिए, न्यू चाहिए, पैसा चाहिए. We'll go into that level. And really, when you ask yourself, what do I want? Anyone? Yes. क्या चाहिए? Anyone? Peace. Mental peace. Mental peace. Okay, great. There is no end to any wants actually. Wants. But somewhere if we can find a soul satisfaction for the dunya and akhirah, where we can have everlasting peace and tranquility. I mean that's dunya which is into rain. Okay. But apart from that, a soul satisfaction. No, I want akhirah. Yeah. That you are saying now. Akhirah I want. Yeah, both together actually dunya and akhirah. Okay. Between your I dunya want. and akhirah. Yeah. क्या चाहिए मुझे? दुनिया और आखिरत चाहिए. मेंटल पीस चाहिए. Yes sir. So what is coming to me? I want the process through which I recondition myself to a purest form, which was my original form when I was created. But in the journey, it got impure. Corrupted, impure. Yeah, so I'm looking for something through which I can make myself pure, so that when I leave this body, I go in the purest form. You have been searching for it. Yeah. To find your process. And that is struggling. Yes. Okay, great. Beautiful, is it not? Very beautiful. Very beautiful something. Yes. But the process is namaz, to call Allah. That is the process to pure yourself, I guess. Yeah, namaz. Yeah, prayer to pray Allah. क्या चाहिए? नमाज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ultimately what do you want? I just इनको आंसर करेंगे. कभी कभी इसलिए नहीं करना, कभी नहीं करना. अब यूजुअली देखो, बस मिसाल देता हूँ मैं. मैंने अब हम फैमिली के साथ we go for a restaurant, we take visit now to have lunch, dinner, क्या क्या. और already we'll have in mind जाएंगे तो ये ऑर्डर करेंगे करके. And when you go to the hotel, enter में वहाँ जाके देखते हैं तो सब जने कुछ खा रहे हैं. अब तुम क्या ऑर्डर करते हैं? जो खा रहे ऑर्डर कर रहे हैं या तुम सोच के ऑर्डर करते हैं? See, yes, your perspective has never mind. You agree also is okay, but ultimately in your words में डालो.
He expressed in his words, Hmm. what do you want? He said, namaskar. क्या चाहिए तुम्हें? I want peace. जी? I want peace. Peace. and Peace. Sleep, huh? Sleep with my child. Sleep with my child. Okay. Without my child. Without my child. कि थोड़ा सा सुकून मतलब। सुकून चाहिए मुझे घर के कामों से अपना थोड़ा मुझे मैं peace Ultimately, चाहिए। all that is there, I want peace. Peace, yeah. सुकून नहीं है. Sure. I got everything, but I'm not having that tranquility, peace within me. Okay, great, yeah. Anybody else? तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुकून ही चाहिए। मैं वही था मेरे Like when we क्वेश्चन। were students, Child है बाबा, when we are to seeing. achieve the exam is my goal. But once we start a job, to achieve the biggest position is the goal. Once you reach the goal, again you're not satisfied. Again you look for something The else. question is, ultimately, ये गोल है, बचपन में है, ये दुनिया चाहिए तुम्हें. See, ultimately, we are not asking for you want. That's why I told comprehensive, the dunya wala. You don't want दुनिया ना करो. Yes or no? कभी सोच भी नहीं सकते, पर्सपेक्टिव भी नहीं है, क्या चाहिए? See, the motion of life you are doing and going through this cycle. जितना ये करते जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं. Going through that, life is करके, लेकिन just सोचो क्या चाहिए मुझे? मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. Ultimately, what you want? जन्नत चाहिए। ये- आखिर सो इम्तिहान में पास होकर जन्नत आसानी से हासिल चाहिए। जन्नत चाहिए तुम्हें. एग्जामिनेशन पास करके जन्नत चाहिए उसको. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. या I just want like my mom and dad, whatever they want, I should fulfill them. I should not tell no for them. So that is again, you are there to fulfill your parents' decision or this happiness, joy. Then again you are okay, okay. Yeah, I want Yeah. wealth. ये हर किसी के दिल में है। सही है, एक्चुअली सब कुछ है। और कोई No बोल money, नहीं no रहा honey. लेकिन उन्हें बोल रही है। क्या बोलते ये हैं? सब मिल जाएगा, जितना भी सबने बोला। Ultimately, see now, if we come, जितने बता रहे हैं, either you want एक बोले कि दुनिया, then आखिर आए हैं. दुनिया means what? Position, power, money, name, whatever, each one has got their own, is it not? कोई जन्नत चाह रहा है, कोई आखिरत चाह रहा है, कोई पीस चाह रहा है. क्या मिसिंग है? हाँ? नमाज़ पढ़ ले रही है, अल्लाह आएगा बोल रही है, ईमान मालूम नहीं आता है. So what is the जी. completion of life? Completion, really. What is the attaining of? In all these words में अल्लाह किधर है? Where is Allah? हर जगह मौजूद है। Yeah. अल्लाह यहाँ हर जगह मौजूद है। Yeah. Omnipotent, omnipresent. Ah, आएगा तो And कहीं. yes, but when we want it is through Allah. It's in our And when we want Akhirah or Jannah, it's through Allah. So that we can't achieve everything without Still, Him. you want जन्नत, अल्लाह नहीं चाहिए. अल्लाह चाहिए, एक्चुअल सबको। See, the question is, see, no, see, I'm not that I'm saying, just be very, very deep and जाइए तो. So, अल्लाह हमारी जिंदगी में है या नहीं है? Always with us. always. ये Yeah, with us. Okay, we'll see. When I say he's there, means let me cross check. है? yes, I हमेशा ये हमेशा है जी हमेशा तुम्हारी जिंदगी में कहाँ है? Okay, let's see. Let's cross. सांस In और every सांस action. बगैर उसके बगैर उसके नहीं बाबा सांस की I'm not taking equality जो सांस है वो अल्लाह है मौजूद है हमें we're not denying अल्लाह नहीं है बोल के there is no God बोल रहे हैं अल्लाह है. My very question are you getting that Allah is in my life or Allah is not in my life? Allah है. See, this is where we are not very clear. Let's skip that also. अगर अल्लाह है, now we say that Allah is there
in my life? Is all our decisions are based on Allah or based on your mind? Based on your mind. Mind. The willingness. जी Allah's willingness. जी Allah's willingness. willingness. विलिंगनेस के लिए सारी जिंदगी तुम्हें दिमाग चला रहा तुम्हारा है या अल्लाह है? See, this is something very, very clarity नहीं है. I'm talking. This is where we have to work. Not at all that, but I'm talking about नहीं है, हमें नहीं मानते नहीं है. Clarity नहीं. This is what we want to say. आखिरत चाहिए, जन्नत चाहिए, ये चाहिए, पैसा चाहिए, वो चाहिए. अब वो चाहिए कि तो दुआएं करी अल्लाह तुझे दे. That means I am using Allah. होना जाए कि अल्लाह मांग रहे कि मुझे ये दे दे, मेरी बीवी को समझ दे. सब बीवी जाके मांगते अल्लाह मेरे शोहर को समझ दे, बहुत करके उसे पैसा दे देंगे. Either way we are. I'm thinking certain questions I'm asking is these are the questions. Question is, जी. it's not a plain question, it is a smart objective. जी. It's of an objective of achieving Jannah or Akhirah or like that. Let it be a smart objective. What is smart? Specific, measurable, achievable, realistic and timed. So we have to get onto the path. So onto the Allah's path and achieve those. See, he is looking after process and you are looking after smart. He should want to Allah Riza. जी? He should want Allah Riza. अल्लाह ही नहीं है तो कहाँ से अल्लाह? देखिए, I'm not saying let's that's what I'm saying. Conversation we are engaging inside, and I am going to check within myself. I'm not saying that you're not there. You're not there. What do you say? That's what he is saying very clearly. See, I'm pure. I want to purify. I want the process. I want to check, and I must be very sure that I am pure. And then when I go, I want to go in the purity state. That is the success of my life. मुझे नहीं हो रहा है वो. In the process, all garbage has gone inside me. Willing or willing, keep बाहर गिरना है. So how do I cleanse myself? See, this is the very in the technical terms you might have put it. From the spiritual sense, from the philosophical sense, अलग वैसे बोलते हैं. क्या बोलते हैं? So this is the questioning now. We just say, we keep aside that. Next question I'm asking is Islam. Okay. Is Islam a religion or a way of life? So, yeah. Religion. जी? Way of life. है तो विदेश है तो religion but way of life. इस्लाम एक मजहब है या जीने का? जीने का जी? Both. both. Yes, I know. पहले तो वो हुआ करता था ना कि वो जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका होता था, लेकिन अब वो सिर्फ मजहब रह गया है क्योंकि हमने बाकी दूसरे जो है वो फॉलो करते Both है. That means to say now, whatever we are going through, are we in confusion or clarity? We are all having a very clarity है या confusion में? Tell me, what are in the state of? Confusion. There's no clarity. Instead of confusion or clarity? Are we saying 100% tack? Yes, That नहीं है. way of life, yes. Way of life है, लेकिन हाँ. my question is, see, है अलग है. मैं क्या बोलूं, तुम्हारी जिंदगी में है क्या? Are you living a way of life of Islam क्या? I don't know. है अलग है. Allah है. Gravity is also there. Allah is there. क़यामत है, मरने के बाद मैं वो है. लेकिन अल्लाह किधर है? So the question today is very misconception I'm talking about it. Is Islam a Muslim? What is religion? What is religion and Muslim? What does it mean? Let me clarify that. What does that mean? Muslim का तो क्या? Religion का तो क्या? Either in Urdu or Muslim. What does it mean? अल्लाह को एक मानना. जी? अल्लाह को एक मानना. अल्लाह को एक मानना वाहिद. नहीं, अल्लाह को माना ईमान है वो है Set मजहब है. of जी? rules.
rules, regulations. That means उसका मजहब में that means all the things have been saying ये करना नहीं करना हराम हलाल शिरक बिदअत right wrong should not, you should dress this way, you should get up this way, do that way. These are the rituals करना खाना नहीं खाना. Is Islam just a doing religion? It's a being. Being. या सिंगर But what are we doing now? We have to be. What is present situation of the Muslims? अच्छा Way of life है या मजहब? We just follow blindly without pursuing. Blindly, you're following certain particular school of thought. You're not blindly. जो मनमानी नहीं कर रहे ना. There is certain. You may be following one. They say you're following. बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है. पता ही नहीं वो अलग है. वो अलग लेवल में आप लोग हैं. पता है नहीं केयर ही नहीं है. Just जीने खाने जा रहे हैं. लेकिन we are all little bit of मिडिल ईस्ट में है ये है क्या? मिडिल खुदा से है. तो हमारा क्या है? आज अगर वे ऑफ लाइफ है सब मुसलमानों if Allah Islam is a way of life of whose way of life? Islam is whose way of life? जी prophet कैसे नहीं है? again prophet भी किसका? Allah way of life. prophet से way of life को नहीं हमें we are not following prophet नहीं है हमारा खुदा. He came and converts or he brought and he is showing that ये अल्लाह का रास्ता है. तुमको चलना है. कुरान में बोलता है कि ये अल्लाह का गाइड है. So Islam is the way of life. Means whose way of life? Whose? Allah's way of life. The moment I say Muslim, the moment Ashhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, kalma padhe, shahadat kare, ilm kare, what am I testifying? What am I declaring? There is no God. God है नहीं है वो बताइए टेक्निकल. What am I saying? I'm going to adhere to every rule and practice. ना rules भी नहीं है. Rules and practice नहीं है. Well, I am going to live my life Allah's way of life. That means I chose Allah's way of life. Allah's way of life chose करना कुरान में दिया ये करो नहीं करो वो करो. That's all I'm going to be. What do you say? There must be a that's all. Then comes I choose a way of life. When I choose Allah's way of life, then comes another commitment. No, मना हुआ गोश्त नहीं खाना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना. अब मैं नहीं choose किया तो Allah's way of life उसको कहाँ है? It is there. So for whom it is? For whom it is? The do's and don'ts and everything. For whom it is? जी? हमारे लिए नहीं. Don't include me. Those who have the taqwa. जी? Those who have taqwa. That is able to follow. जी? Those who have taqwa. Taqwa you must not manage. First of all, let's get this clarity. The question is, Islam is a way of life. Islam is a way of life. Whose way of life? Allah's way. So when I say I'm a Muslim, that means what am I declaring? Saying I'm living whose way of life? See, when I declare, other people not declaring, they are living. Then when I say then the book will come, then your dress will come, the way it comes, things are there, that will there. When I don't claim that Allah way of life, then I am not free. Are you getting very clear now? Here? Now today, as present we see, each and every, let us say, other non-Muslims or other human beings, पूरे बोलो कौन सा way of life जी रहे? Whose way of life they are living? Today's world. Today's world or their own, I'm saying. Whose way of life? जो उन्होंने समझे सी क्या है? They are living whose way of life? किसकी मर्जी? मेरा पैसा मेरी जिंदगी मैं कैसा मानता हूँ नहीं मानता हूँ मैं करता हूँ. I will do, I will not do. अच्छा है अभी कर रहे हैं. Not that buरा है. They are doing much more good work than others also. But they are all following whose way of life?
किसकी वे ऑफ लाइफ फॉलो करें, किसको फॉलो करें वो? Like atheists, they do follow their own way. About the believe in God, let not go for belief. No, I'm not going for belief. Believe God and I believe Jesus command name. We are not going to a different kind. I'm saying Muslim, and then the rest of the people. Categories, we are not going to go a religion, Hindu, no belief correct. We are not going to belief system. I'm going to way of life. जिंदगी जी रहे उन्हें क्या तुम्हें क्या क्या मान रहे जी रहे इन्हें नहीं मान रहे इन्हें जी रहा सो तो हर इंसान एक दो कैटेगरी हो गया हमें आई बिलीव एंड से और आई से अल्लाह है देन कलमा है देन आई वे ऑफ लाइफ हमें एक चूज करें द रेस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग विच वे ऑफ लाइफ whom they are following जी So it is apart from Allah. the rest of the people let it there Against. not again भी नहीं क्या भी नहीं है listen very clear I'm going get it they're living or not living they're living and following whom and following who on what basis His own comfort, his own comfort. own very good own किसको सुन रहे हैं और किसकी जिंदगी जी रहे हो ये नफ्स है और बेगा they're all living according to whom whatever We want. I like it I find it I believe I don't believe ये पसंद मेरी बोल नहीं बोलो तो जिंदगी वो लोग सब जी रहे हैं किसकी जिंदगी जी रहे हैं अपनी जिंदगी But ये Muslims are also. अब वो करो ना मतलब don't go fast don't go fast forward please stop Yeah. let us get there see I'm talking about we are talking about here Quranic education Quran is Furqan Furqan is what फर्क करने की सलाहियत see I'm not giving it so here we are all and my education is Furqan means Furqan basic Iqra education जो पाठ करना कुरान सबको फुरखान की सलाहियत देना तभी तो फुरखान पढ़ा है ये मगब करके पूरा ये दर्शन दे रहे नहीं है टू फर्क करने की सलाहियत अगर फर्क करने की सलाहियत नहीं है तो कुछ फायदा नहीं तो जस्ट बेस में आप देखेंगे लेट अस फर्क करना है जस्ट आई एम डिस्टिंग्विशिंग इट नाउ आई से आई एम ए मुस्लिम आई बिलीव देन आई लिव अ वे ऑफ लाइफ ऑफ व्हाट दिस वन द रेस्ट पीपल हु अपना एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो क्या करेंगे पूरी दुनिया वेस्ट दुनिया में जो जी रहे वेस्ट एवरीवन लिविंग अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग हूम लिसनिंग हूम Don't what I say Allah's way of life I chose then I listen to Allah or not listen to Allah जी I listen to Allah I say Allah's way of life means that I will listen to whom and I will follow whatever Allah says I listen to him do eat not eat sleep do everything I am listening to Allah the rest of the mankind who are not then they are listening to whom and they are living and whose way of life Their own, the way they are conditioned. the conditioned following either they are Sorry, their own self, shaitan, whatever. that means they're listening to and their mind है किस पे से किसकी सुन रहे हैं अपनी माइंड की सुन रहे हैं या अलग सुन रहे हैं Mind. Ghaflat में भाई. Let's not go into that, sir. See, they have chosen that, sir. It's not about that. Let's not go into those things. Let's say deeper. Let's go to basics clarity. अब हमें दोनों को फर्क कर लेंगे मेरे में तुम्हारे में क्या फर्क इनमें और हमें क्या फर्क बस हमें get the clarity is it not so that means the whole of mankind in this दुनिया में जो है तो उनका reference point क्या है what is the reference point of their living life अब जिंदगी जीना है जीने life is of life when they are living life every moment
we have to make decisions. Is it not? Moment to moment decisions. अब ये डिसीजन जो हर इंसान ले रहा है तो वो डिसीजन मेकर रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? माइंड है? कौन है? माइंड है, दुनिया है. Mind, whatever basis है. So he is using mind as the reference point. Mind जैसा अरे इन्हें गाली दिया, माइंड से इन्हें गाली दिया, इसका बाप क्यों माइंड देना? तुम कुछ बोले तो उसका डबल देना. So the whole world is, उनका standard is what? Of reference point, standard, benchmark of all the decision making, actions, behavior, attitude is coming from where? The minds. Yeah? Mind. Mind. Mind and the past experience. What the? See, mind means we'll go to the past experience. सब चीज़ें मेरा बचपन से करनी चाहता हूँ. बोले हाँ, बाप पैदा हुआ पूरा प्रोसेस में पूरा गड़बड़ कर दिया करके. वो देखेंगे बाद में. बाद में. The basic, now let's see the basics, this is what. What is the difference between them and us? Distinction. फर्क फुरखान. We have Quran. कुरान क्या है? कुरान क्या है? कल में उनमें और हमारे में क्या फर्क? उनका रेफरेंस पॉइंट, उनका बेंचमार्क, उनका डिसीजन मेकिंग सेंटर is operating of all their life is who? Mind. Mind, self-centered. Okay? Then when a moment I say Allah, I surrender, accept Allah, तो मेरा डिसीजन मेकर कौन होना चाहिए? पूरी जिंदगी में Allah. Mind and heart. जी? Mind and heart. No mind and heart. So don't bring mind. Allah. See, let's go and take it. Allah is there. जी? From Allah. Allah-centered. That means to say Muslim is one God-centered life and other people are mind-centered life. So they are mind centric, we are Allah centric. What do I mean? सब अलग-अलग नाम रख दिया है. हमारा हमारे जो भी एक्शंस हो रहे हैं, अब हमारा नजरिया जो है देखने का गॉड सेंटर्ड है, अल्लाह सेंटर्ड है, माइंड सेंटर्ड है. अब हमारा पूरे दुनिया में मुसलमान है. अब मुसलमान का क्या सेंटर है सर आज प्रेजेंट? व्हाट सेंटर यू आर लिविंग योर लाइफ? Very difficult. ये Very difficult, sir, actually. ये It's very difficult to answer. answers are very clear, sir. Yes. But Not doing. if I say mind center, because as these are Dunya centric, of course we are going along in the street. We are not soul searching ourselves whether we are on the right path or not. बच्चे में राइट रॉन्ग की बात नहीं है सर. अभी क्या एक्सपेरिमेंट, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है. See, I'm saying because you're not clarity. I'll give you clarity. लेकिन बात इसलिए पहले let's go to the basic fundamental. Whether I am living or following अलग बात है. क्या बात है ना? See, whether I am doing it, following it, living it, secondary thing, is it not? I'm not doubting that कर रहे नहीं कर रही है. लेकिन बेसिक दोनों में डिस्टिंक्शन फर्क फुरखान क्या है? उनमें और हमारे में क्या फर्क है? जी? And when I say I'm a Muslim and I believe that my whole life, everything, my life operation should come from which reference point? Allah. When I am living by that reference point, then Allah is in my life. Yes. When I am not living by that reference point, I am just doing certain namaz, sunnah, roza, hajj, umrah कर ले रहे तो religion हो गया है. मेरा माइंड सेंटर्ड हूँ, मैं ये कर ले रहा हूँ, ये सब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जो जन्नत के लिए कर रहा हूँ, दोज़ख के बचने के लिए कर रहा हूँ मैं. I'm all doing everything for whose center? For whom? Ourselves. तभी से मजहब आज इस्लाम मजहब है या वे ऑफ लाइफ है आज? Mazhab. That is what today, when it become a religion, it has become mazhab.
ये जिक्र कर लो, तस्बीह पढ़ लो, तहज्जुद पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन जिंदगी जीने में मनमानी, इसका पैसा कैसा कमाऊं? कार्टून उतरते ही कि गाँव में अरे IRS दुबई की पार्टी देखो, किसी को चांस की साइट है, बस कर लो डबल अब मैं देख लू कौन सा सेंटर से देख रहा हूं, अब देख लू तो कौन सी आंख से देख लू, मैं कौन सी आंख से देख रहा हूं, वो दो आंख है, वो अल्लाह बोला ये आंख अंधी नहीं है, ये मुर्दा है, ये ब्लाइंड है, ये अंदर की चली है। मेरी इस्लाम से आज सारी दुनिया में आज क्या हो रहा है? Everyone is following his own Islam. Are we following the Islam or doing Islam? Are you following the divine Islam or you following your own Islam? You, As per our convenience, we follow. जो समझे तुम्हें जितना आए उतना कर लेके कैसा की पास हुई तो बस ऊपर कर गए। That means living whose way of life? Whose way of life? Then मरने के बाद जन्नत फिरदौस। Who lives by Allah's way of life इस दुनिया में? अल्लाह के way of life को जो जीता है और वो मरेगा तो अल्लाह उसको वो देता है। सारी जिंदगी मैं जो समझा, मैं जो करना है, मेरा मन में करके I live, then I'm living well, sir. Are you getting what I want to make clarity? Like, are you getting what I'm saying? Then are we living in reality or are we living in गफलत में है, क्या बोलता है, illusion में है, deception में है या reality में है हम? बाबा अगर ऐसा हम जी के चले गए तो वापस आ सकते क्या? ये दुनिया तो सबको दे दिया अल्लाह, तुम्हें मानो खुदा, तुम नहीं मानो, तुम्हें अपनी मनमानी कर लो, झाड़ू की शादी कर ले, कुत्ते की शादी कर ले, there's nothing, is it not? दुनिया is for everyone. Whether you believe in God, you don't believe in God, दुश्मन हो जाओ क्या कर, it is immaterial whether you believe or not believe. I said this is something else. But akhirah is for whom? Now let's see now again. Another perspective. Now just example, एक ही point पे रहेंगे. I'm starting with Prophet Makkah है, Makkah there. Before the Prophet came to Makkah, what was their living? What was the center of lifestyle, center of operation? Idol worship. We will not go for idol and अपना पूरा decision making इसका रहा है. Might is right or this thing, I ताकत अपनी नाम use करके I can use, I can throw, I can. So who centered life? Self-centered power. Society, human centered. Either you are human centered, means a tribe, clan, or individual, ताकतवर, पैसा. Then they are there. That was the lifestyle, is it not? अपनी किसी को पूछ रहे, पास को पूछ रहे, ये करे वो नहीं जाना है, वो lifestyle है. And then Prophet came to Mecca there. Did Prophet go and told them just बोले कि भाई ये बच्चों को जिंदा नहीं करना, ये शराब नहीं पीना, ऐसा नहीं करना, ये अल्लाह एक है, क़यामत है, आखिरत है, ये करो. Did he come and do that? Just tell me so. He followed. Did He followed. He practiced and he no followed. practice नहीं करे. Did he go and preach that you should do this, you should not do this? ये है, ये अल्लाह गलत है, क़यामत है, आखिरत है. He got the revelation. क्या revelation लाया वे? What did he do there for 13 years? Did he preach?
कि तुम्हें अपना लाइफस्टाइल से तुम जी लो, कैसा भी दिन जी लो, लेकिन दाढ़ियां रख लो, खाली ये करो, आखिर करो, घर में रखो, ये नहीं करो, वो खाना नहीं, मुर्गा नहीं खाना, खाली वही बोले क्या? नहीं, आप अमल करें। अमल करें। See, question I'm asking you just like, did he go there? Live your own, whatever you're living, but you just believe in Allah, आखिरत बनने का, ये काम कर लो, जाके वो करे क्या? I do not ask, I'm asking you, did you do that? Did you do that? Did you do that? No, then what did you do? You preach about Vairagya. That means तो सब तेरा आसान लगे, उनको क्या करे? क्या actually, what actually he did? They call them towards Allah. Yeah, towards Allah, what? Yes, very good. Sadath. What he did? To lead the way. No, let me give up your life नहीं. Allah That's has what he to said. अखिल लाया, ओके अल्लाह अखिल आ गया, अखिल आते ही तो क्या हो? जी. सेंटर ऑफ द मरकज अल्लाह बनाया। सीरियस. क्या बन गया? अल्लाह उनका कहाँ से निकाले? अंदर से माइंड सेंटर से क्या करे? निकाल दिया। निकाल के ले लगा, गॉड सेंटर लेके आ गए. Self-centered, ego-centered, I-centered, Allah centered. and then inside he never said anything outside. He shifted from where to where? अल्लाह। From where to where? Mind Mind to? God. Allah. अब ये शिफ्ट करें, and that shift has he made it. He never ever said no. After shifting, then से बाद में आना शुरू किया, शराब नहीं पीना, वो नहीं, ये सब. The moment because it was God centered, Then when it was God was there, शराब नहीं पीना तो जो था वो निकाले. अमल करना आसान हो जाता। अगर मुझे अब आया तो माइंड सेंटर है, क्या बोलते हैं, अरे मेरा स्टॉक खत्म हो गया, करेंगे. I will finish this one. इसके बाद से मैं तोबा नहीं करता मैं. तो we talk. So Allah does not change your external life unless you do not shift inside. Allah does not change your circumstances when outside until you shift where? Shift from where to where? From the mind to heart. Heart is what? Allah के रूप. अब ये सेंटर ऑफ ऑपरेशन आ गया तो ये आंख मिल जाती है. ये हार्ट सील हो गया है, पत्थर हो गया है, ताले पड़ गए हैं, बंद हो गए, तो then what happens? My this is dead, then whole life I will be living with what? One eye, one centered. That is the job. One eyed person. Because this eye is dead. And this eye is not for all. Unless you work on it. Are you willing to shift? And the most toughest thing is what? Very easy. अपनी मनमानी की जिंदगी तुम जी रहे हो, तुम कर रहे हैं. Then you add up namaz, roza, zakat. He is adding something else. Christian is adding something else. Something else. है क्या नहीं बोलो? वो क्या है? और आज के मुसलमान, वो मक्के के मुसलमान आगे कंपेयर कर तो क्या था? सेम है नहीं है? Then क्या है? तो कहाँ हमारा इस्लाम पूरा डाउनफॉल and everything decline शुरू हो गया? When did it start declining, sir? The moment they brought in what? The shift कोई कर रहा है नहीं कर रहा है. If there is no shift and you are connected to your mind and do 1,000 Hajj also, what happens? अब हमें जो मैं कर रहा हूँ, नमाज पढ़ लिया, हज कर लिया, मैं इतने तरह कर रहा हूँ, बस मैं वो कर लेने से तुमको जन्नत मिल जाती है. Is it by doing those things you will get Jannah? No. Is it anywhere proof to be? No. Then हम ना किसमें दलाल है? किसमें दलाल है हम ना? पूरा किसमें दलाल है लोग? करने में दलाल है नहीं दलाल है? ये करने में दलाल, ये कर लो, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तुम्हें उससे ज्यादा करना शुरू करवा. लेकिन अंदर क्या है? That's what he said. What is inside, sir?
क्या अंदर है? क्लीन है, कचरा है? That's what he's talking. I am doing what I am doing, but my garbage is inside me. And Allah says, those who qalb salim, Purify. those who bring the heart pure, and qalb salim आएगा, वो जाएगा जन्नत को. क्या हमारे दिल साफ है या कचरा भरा हुआ है? Yes, sir. हमारी नजर कैसी है? हमारा लेन देन, दिस इज वी कॉल इट एज ए हमारी कंट्री, कैसा जाएगा किसी को? अल्लाह की आंख है या कोसी आंख है? तो उनमें हमें क्या फर्क है? Tell me, what is the difference? Sometimes you find they are better than us, no? You know, just you say. तो क्या हो गया हमारे साथ? क्या हो गया सर तुमको? क्या तुम शिफ्ट होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते? See, unless without shifting, what will happen? Come on, tell me. Will be one among them. ये इसके ऊपर कोई काम हो रहा क्या? Is there anyone guiding you how to share? Yes, now like Is there anyone telling you how to purify yourself? कर लो, नहीं करो, वो कर that करें. Furqan is what, first of all, I believe. This is where I also, though I was a Muslim, though I was in Ummah ke saath, 50 years running Islamic wise, doing great work of Islam, 50 years, this was my operation. And that is where it shifted from year to year. And my life, that is 2001, I got connected here. And then when I got connected, and I got that, then I said, how do I tell people, ये कैसा मैं दे दूँ, कैसे करेक्ट करूँ? That was the thought, and another calling. And this is where the workshop started. Inside, Allah की रूह है अंदर. It is a pure है. It is inside you, is it not, sir? There is only the dust has fallen inside it, and the wells have fallen. That's it. Clean करना होगा तो you will be there. It is not about knowledge. Allah is not going to test you on the day of judgment based on your knowledge. कौन पाक लेके आया? This cleansing process is what we have to see. And the whole Quran has been sent for that purpose. And we are not reading from that perspective. This is the book of Quran. तो ये गैर कौम और हमने में क्या फर्क है? अब पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम, आप बोलते इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल बोलो, मदरसे बोलो, हर एजुकेशन तो मैं भी दिन पढ़ रहे, दुनिया पढ़ रहे, जूम में पढ़ रहे, पूरा माइंड को कनेक्ट कर रहा है या दिल को कनेक्ट कर रहा है? All that education is connecting to the mind or the heart? Mind. Where is heart? And the Quran addresses the heart or the mind? So this is something missing. इसकी प्रायोरिटी भी नहीं है, ना किसी को टाइम है इसके बारे में सोचने बैठ के देखने के लिए. भाई मेरा को क्या कंसर्न है? मैं दुनिया तो सबको नहीं आती, आखिरत में तो क्या? कैन यू गैम्बल सर? कैन यू टेक द रिस्क सर? कैन आई कम बैक अगेन? यहाँ तो दुनिया में कुछ हो गया तो भी सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. Anything can happen in this world, but can you take the risk? You should be very clear, and Allah has very clearly says who will pass and who will fail. I'm not talking from my perspective. I'm not interested to put my view. I want to connect it to whom? So my whole workshop is about what? Connection to whom? Connection to whom? हमें समझते हैं कि नमाज रोजा मैं दुआ ये पढ़ना मैं उम्रा कर लिया तो मैं कनेक्टेड हूँ. यू आर अस्यूमिंग इट बिकॉज आई एम टू मच आई एम डूइंग करके, लेकिन नहीं, दैट इज नॉट यू आर थिंकिंग. आर यू प्योर इनसाइड? देयर इज अ टेस्ट टू चेक. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग पीस ऑफ माइंड. यू डिस्टर्ब. सो Allah sent this book
and the Prophet to us. जानवरों को नहीं भेजा, परिंदों को नहीं भेजा, किसी को नहीं, इंसानों को क्यों भेजा? So what is this book about? Obedience. Yeah. Obedience. Yeah. Obedience. Obedience भी नहीं, वो एक्स्ट्रा हो गया. अब देखिए उसमें भी समझिए, देखिए एक और एक क्या हो गया मालूम है? This is one of the whole Islam has been put into the external. Allah does not change external, internal change. Internal की कोई बात कर रहा क्या? तो किस पे फोकस किया? ये करना नहीं करना. Then external law, what is it now? The whole principle of Islam, or law of universe, everything is cause and effect. What is it? What is it? Cause and effect. So what is primary? The cause or the effect? ये क्या primary? Cause. ये Cause. cause. लेकिन हमारा तवज्जो cause पे है या effect पे है? तो that means diagnosis सही है गलत है? And that's what is happening. And Allah is talking about the cause. And your virus, Allah बोलता है कि तुम्हारा मर्स कहाँ है? Virus is where? जब तक ये वायरस को नहीं निकालेंगे, ये मर्स को निकाल तुम्हारे सारे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला. And the Quran is talking about the cause and then effect. आज सिम्टम पे ट्रीट कर रहे हैं या कॉज पे ट्रीट कर रहे हैं? Symptoms. That means diagnosis now. So our whole thing as Quran talks about the cause. The Prophet did Makkans को शिफ्ट इंटरनल करे या एक्सटर्नल में करे? इंटरनल करे शिफ्ट. जब उनका इंटरनल प्यूरिफाई हो गया, पूरा कचरा निकल गया, पूरा गंदगी निकल गई, पाक हो गया, प्यूरिटी आ गया, खुदा आ गया. अब नाउ व्हाट हैपेंड नाउ? सो मक्कन की लाइफ क्या थी? माइंड सेट कर दिया, माइंड इज आउटसाइड एंड इन लाइफ. माइंड सेट इज ह्यूमन एंड ए बीइंग. ह्यूमन फर्स्ट प्रायोरिटी, ह्यूमन प्रायोरिटी. बीइंग इंटरनल हो गया, तो आई यूज माइंड हो गया. अब द प्रॉफिट शिफ्टेड क्या करे उनको? आउटसाइड इन की लाइफ को क्या करे? इनसाइड आउट लाइफ. इनसाइड आउट लाइफ है, बीइंग ह्यूमन बना दिया. ह्यूमन बीइंग सब जने हैं. मुस्लिम इज हु? बीइंग इज प्राइमरी, ह्यूमन इज नॉट. तो हमारा बीइंग को खाली डूइंग में डालना है. तो मजहब रिलीजन इज ओनली डूज एंड डोंट्स, राइट रॉन्ग, शरअ फिक़ह, शरिया फिक़ह, इसमें भरा डाला है. शरिया फिक़ह इज इन इस्लाम और इस्लाम इज इन शरिया फिक़ह. बात करें तो we'll keep that side. So that means what is primary now? What is primary, sir? Inside is inside and out. Discipline. So that is outside. And that's why it is not just by talk, lecture से नहीं होता. That is a process होता है. जैसे इसे process takes a 3 days process of cleansing process to purify. बचपन से conditioning करके हैं. The mind has been taken over you, and then you to take back into your life, look within yourself, ponder, reflect करके पूरा का unconditioned करके clear करके, then give you the purity power. This is what we do. And third day, people are this, and even not certain. You have given me the rebirth. Today, I am born again. So that is about it. But anyway, now what? The Quran, the education of Quran is what? What's up? फर्क करने की सलाहियत. So now the question is, now we are going. अब हमें क्या चाहिए? अब कंफ्यूजन में है, क्लैरिटी में है. जब माइंड से कनेक्ट हो गए तो क्या होता है? जब हार्ट में तो क्लैरिटी यहाँ है, माइंड को कंफ्यूजन. अब हमें क्या चाहिए? What do I want now? Clarity. I need clarity. Everyone, not me also. I know something. Everybody is in some level. What do you say? Clarity. And who can give clarity? You? No, you can give clarity. That was clarity.
अब किसकी क्लैरिटी है? See, you are, when you are blind, आंखों में पर्दे हैं, क्या क्लैरिटी? When you are confusion, how can you get clarity? ये क्लैरिटी चाहिए, कौन देता क्लैरिटी? Who can give clarity? जी? Who? 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 Allah. 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 Not any human being, the biggest scholar on the let him be the whole world's best top scholar, he cannot give. Who can give? All knowing. Allah says Al-Mubin. Al-Mubin means what? One who gives clarity. And the Quran ka naam kya hai? Al-Mubin. Book that gives you clarity. Not me, not anyone. Nobody can give. कितना नॉलेज है हमारा, इसलिए we are following some human being में confusion कर रहा है पूरा. So my job is to connect to Allah and the book or connect to me. Every Muslim should connect to whom? Allah. As a mother, you should connect your children to whom? Allah. But are we doing that? एक clarity आ रहा है. First thing. Now next question ऐसी को सवाल करिए. Now the question is now this equation we saw mind and all that. Clarity एक किताब clarity देता है. Clarity किस चीज से देता है? Next I will ask the question up again. What this book is giving clarity is what he want to give clarity about. He sent a book for clarity and then he sent a book to give you clarity about what? Life का जी clarity किस चीज का देता है? Like we read Quran पढ़ रहे हैं. Not that you are not reading, you are not reading, but are you seeing the book from this perspective या कुछ अपने perspective से पढ़ने के चले जा रहे हैं? यानी कि हर आदमी अपने अपने perspective पढ़ रहा है, देख रहे हैं. See what I am bringing you new perspective to see the Quran. ये perspective है पढ़े हैं लेकिन वो ध्यान ही नहीं है उस पे जाने का. The whole book is giving clarity about what? Anybody come on? Is it the purpose of creation? नहीं काम पर्पस ऑफ क्रिएशन मतलब क्या होता है? तुम्हारा कैसा निकल जाता है से? I'm just saying that I'm catching this man because that is the main actually. That is the whole thing. Past personality of life. नहीं है Past जी personality. no Allah says is your clarity about the enemy. Who is your clear enemy? See the word he's using in the Quran. Your तुम्हारा खुला दुश्मन कौन? नहीं तेरी सास. No, she's very nice. Interesting. बहू को कौन नहीं सबसे दुश्मन? सास की दुश्मन को है ना? चौहर बीवी. माँ आजकल के बच्चे के माँ दुश्मन कि तो चाहे हम सब हमारा बाप को बोलती हमें हिंदू क्रिश्चियन इस्राइल Jews. Like Quran is talking about your clear enemies. नफ्स Who? नफ्स बोलते हैं ना नफ्स नहीं बाबा वो सब कहाँ जाके क्या क्या बोला लेको नफ्स बोल रहे हैं क्या है क्या मारे भी नहीं है. Is it not? I'm not saying that. I'm not saying Doctor. See some words here, there, like, are you clear? Is nafs the shaitan? तो क्या जी रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हो? See, I'm not very clarity नहीं है तो मैं क्या जी रहा हूँ सर? मुसलमान हो गया मैं मेरा क्लियर मुझे क्लैरिटी नहीं तो बोला मैं नहीं. Very clear enemy. Your open enemy is who? जी नफ्स नहीं सर. कुरान में कहा तभी अल्लाह ताला तुम्हारा दुश्मन खुला दुश्मन नफ्स करके बोला क्या? But that's what I'm See, when I'm using the word nafs, you're saying nafs. Did anywhere in the Quran Allah is using your enemy is nafs? Anybody is using? Then why do you say? See, that is the benchmark of us. Quran is the benchmark.
उसके रेफरेंस से कौन क्या क्या बोल रहे थे कि उन्होंने सब हमने उसमें नहीं जाएंगे ना। कहीं कुरान में बोला कि नफ्स तुम्हारा नहीं है, वो से व्हाट इज से शैतान, द वर्ड वेरी क्लियरली इब्लिस है, शैतान है देगा। So next question I ask, are you listening to shaitan? Yes. Sometimes. Sometimes. नफ्स को सुन रहा जी नफ्स मत यूज करो किसकी क्या बोलो बोलो नहीं नफ्स को सुन रहे हो नहीं बोलो। See, we are yet to clarify, nothing bad wrong, right? This is how they have programmed her. They were telling nafs है हम करके ये nafs का word simply बोलते nafs है। I'm talking about, man, that means you're not clear, is it not? Am I listening to Sadath? कहाँ है? क्या कैसा सुन रहे? कहाँ है बोलो? क्या सुन रहे हो? वैसा एक म्यूजिक बेसिकली तो Music, जी? Music is not shaitan. Music. if I'm lying, I'm listening to Shaitan. तुम झूठ बोलो क्या झूठ शैतान तुम्हें झूठ Shaitan के सुन Basics in mind. A mind, yeah. that is his role. See, question is clarity है या confusion है? Confusion for it. Now I'm talking about you're just assuming things clearly. जब हमें मुझे तुम्हें और हमें क्लैरिटी नहीं तो हमें दूसरों को बच्चों को दूसरों को क्लैरिटी कैसा दे सकते भाई? See, if I'm not clear, how can I give you clarity, sir? We are reading the Quran. अब उन्होंने जो बोल रहे हैं वो हमें सुन रहे हैं। अब हम बोलेंगे क्या क्या बोले सुनते हैं? No, that's not it. I don't. You don't listen. That's why I said, don't believe me. Don't agree to me what I'm saying. I'm not going to accept it. Very fine. Let's talk about the clarity there. From that reference point, what I say is that take it and leave it. No. So then the question is, your clear enemy is shaitan. Allah says, I created you pure, perfect, whole, complete as a diamond. Is it not? You were so beautiful, pure born. And then you got corrupted. And who's the source of corruption? Who is the source of corruption? Who is the source of all the dirt? Shaitan. आंखों में क्या डाला है? पर्दा डाल के पैदा हुए, पर्दे के बगैर पैदा हुए। तो कौन डाल पर्दे? देखिए, अब हमें क्या कहना? See again, she is taking पर्दे डालता हूँ। तो what mechanism? What is shaitan? What it is? अब हमें उतना clarity नहीं है। आंखों में पर्दे हैं जो when I'm now question is if I am having veils in front of my eyes, there is this thing, am I, where am I, what am I living? Come on, क्या हो गया? मेरे आंखों में पर्दे हैं तो क्या हो गया मैं? Blind, अंधेरा, then again what? इसलिए अल्लाह क्या करा था? अंधे और देखने वाले बराबर नहीं। एक चीज, now when I become blind and I am तो क्या होता है? What will happen to me? What will happen to me? We start acting differently. Can't move it. Okay. Now just say I'm blind now. I cannot see. I cannot see what? Reality. जी? Reality. Cannot see Allah. I cannot see the reality. So when I am disconnecting, I become blind. I get disconnected from what? Allah. जी? Reality. Yeah. अब reality disconnect हो गया तो मैं कोसी दुनिया में जी रहा हूँ। Where are you living in? Where am I living in? जी? Illusion. Illusion. अब देखो वो अब हमारा पूरा बाहर निकल रहा है। Allah is saying, think, ponder, reflect. Is it not? See, when we are sitting in things are, it is there. कोसी दुनिया में जी रहे हैं। किसकी सुन रहा है? खुद की। अब खुद का तो कौन? शैतान। खुद की सुन रहे थे क्या सुन? इसलिए आज सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? You don't listen. सुनते नहीं तुम। हमारी कहाँ सुनते तुम्हें? The wife हो, husband हो, सुनते नहीं। बच्चों को क्या बोलते हैं?
सुनते हैं। अल्लाह भी कुरान में क्या बोल रहा है? You don't listen to me. You don't listen to me. Then when I say you don't listen to me, कहते तुम्हें किससे सुन रहे हो? Who are you listening to? हाँ, अब देखो ये कहता है। अब आगे माइंड आगे देखो। तो तुम चलो ऐसे माइंड की सुन रही, तो सारी जिंदगी कौन चला रहा तुम्हारा? हाँ? मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब फिर हमें खाला खाला रसूल अल्लाह नमाज रोजा अल्लाह अल्लाह करें, तो अंदर कौन है? Inside who is there? Outside देखने तो वो है हाजी साहब, अंदर कौन है? तो पैसे दे के देखो पता चलता है क्या नहीं बोलते? पैसे दे के देखो हाजी साहब ये अरे बड़ा खाना खा देख भाई क्या बन रहा है, ले जाके ढूंढ दिया पता चलता कौन है। कभी कभी शादी कर लेती हूँ, मोहब्बत में पड़ गए 6 साल लव में, पूछता हूँ क्या हुआ, who's your husband? कहता हूँ इंसान के ऊपर शैतान की क्या सवाल है? रियलिटी कब मालूम होती है? इसलिए वो शादी नहीं करना चाहिए आज। I'm seeing this. असली कब मालूम पड़ता है? When I can know the reality of you in things. अंदर देखने में खाली बिल्डिंग भी घर में दिखा होते ना, अरे अरे मालिक है इतना बड़ा बिजनेस किया है, बेटी को ढक डालते हैं, बाद में बड़ा ससुरा। कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं? मुसलमान बोल रहे हैं हम, इस्लाम बोल रहे हैं हम, कौन सी दुनिया में जी रहे सर? यही तो खुद फरेबी बोल रहा हूँ, द डिसीवर हैज डिसीव्ड यू। धोखेबाज। कौन? शैतान का नाम क्या है? धोखेबाज, झूठा। उसकी मत सुनो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं सुनो, जनाब क्या खुदा में होता है? He says that majority of them listen, take shaitan as your wali. I am there, nobody is taking my wali. मैं तुम्हारा वली बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा मुहाफिज बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा गाइड हादी बन जाऊंगा। Nobody is taking. अब हमें you want to be in the majority or what sir? Minority. Where you want to be? It's not easy. It's a Jannat. Very few people go by. Majority of the jinn and the mankind are created for hell. Except those who come to me. And Shaitan has challenged Allah and came. Is it not? Yeah. What did he challenge? क्या challenge किया? कि मैं सारे इंसान को नाशुक्र बना दूंगा. I will make every human being ungrateful. Except few. Except means those are connected to Allah. Except those who are connected to Allah, he cannot have the power. Majority. Today are we not ungrateful? Outside the karma पढ़ रहे, नमाज भी पढ़ रहे, everything inside. What is going on? What is going on? ऐसा ही बोलते हैं कि हिदायत खुदा देता है, ऐसा बोलते हैं। भाई हिदायत किसको देता है? कंडीशन है ना सर। जो लेना चाहते हैं वाले। तुम अंदर बसे हुए हैं, उसकी सुन रहे तो हिदायत कहाँ मिलती? और वेट कर लेते हैं अल्लाह हिदायत दिया तो ना बोल क्या? That means who is saying that? Willingness ना। Now willingness. Now you said क्या बोले अभी हिदायत? अल्लाह। Then कौन बोल रहा हूँ? Who told? ये? मैं बोल रहा हूँ। Now he is getting it. Now he is trapping you or taking you out of the trap. Now what is he making you? Getting you that and going is committed. Got it now?
means what does he got the power? शैतान का क्या power है bro? बस every एक है शैतान जिन्ना है, from all the jinn also there is there, but every individual has got a shaitan called Kharim. Every individual. And that Kharim shaitan is there. And what is that Kharim shaitan is what? Waswal. Waswal is a talk. And the talk is what? Mind. And that talk, how it creates mind. अब कैसे पर्दे हमको भी होता है, कैसे पर्दे if we are not going, Allah is showing us. When I create, that's all that all the evil is created by you. All the suffering is created by you. There is no suffering in the reality. तो हर इंसान कोशिश दुनिया में जी रहा है, जी, हर इंसान, सिवाय those whom God, Allah said, those who have saved him, got wisdom दे दिया, वो बच गए. Very few. You want to get that wisdom to come out of that, उसके clutches से बाहर आना है या नहीं आना है? Sir, outside of this, can I ask you? Yes. Now, first of all, it can be a stupid question. Like sir, there is no stupid Now, sir. for example, Learning. I did not ask Allah to make me, for example. Make me, okay. Now Allah created me. Yes. And Allah created Shaitan also. Yeah. Now He made Shaitan so powerful so that he can, Okay. गुमराह कर दिया. Yeah. Now हम जब इसके पर्सपेक्टिव में आके हम जो भी मतलब we are not on the path of life, right way of life. And again Allah penalizes us in putting into hell, for example. Now at the end of the day, the majority of insan and jinn are going to hell. Isn't this the will of Shaitan? No, sir, you chose. Yeah, I know. मतलब क्या है, मतलब majority means, see the majority हमारे मुसलमानों में देख लो, are they living their own self-centered life or Allah's way of life? I agree, but if Shaitan wasn't there. नहीं, शैतान देखिए मामा, ये क्वेश्चन होता है मामा, देखिए इस आसमान में सारी कायनात में चांद सितारे परिंदे जानवर हैं. अब देखिए हमें उसके लिए बेसिक्स बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंसान क्या है, किधर है, इसलिए हम जाते हैं, सब समझाते हैं. अब वो जो भी जो है वो क्या है, दे आर लिविंग इन यूनिटी वर्ल्ड और डुअलिटी में. इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, इंसान को क्या दिया है, ये तो फ्रीडम ऑफ चॉइस. अब द चॉइस आया तो क्या हो गया, क्या गया, क्या गया, The ability to choose. two, duality. With choice comes duality. It's not the choice है, duality. इसलिए कुरान भेजा है, फुरकान दिया है duality. अब पूरी कायनात में जो भी चीजें हैं, they are living in unity or duality. Unity. जब unity में है, they are all listening to Allah or listening to Islam. Listening to Allah. But can Shaitan influence them to see? Nothing. No. Yeah. That's No, all. let's see. Let me go first of all. We'll go. The question now is, there is a unity there. So that's why we said everything is in worship. Yes. कायनात में हर चीज worship में है. Because they are listening to who? Allah. Then अपना नहीं है उसमें. इंसान को choice दे दिया है, जिन्ना को भी choice दे दिया. अब इसमें आएंगे, अभी डिटेल में जाएंगे. See, if there was no duality, you're willingly connecting to Allah. That is a very, very powerful way or not? ऐसा single unity में बना के करना क्या क्या बड़ी बात है? If shaitan would have never denied, then how do I know Allah? Denial अब हमारा evil है, तो हमारी duality good है. Good I'm saying, there is evil. Now this is night I am saying, because how I said this is night? Day is there. खट्टा है, मीठा है, ये मर्द है, औरत है. So everything is in the duality. In the duality you come to recognize. And then he gave a freedom of choice to you or to him. The powerfulness का है, because Allah's energy is very powerful than that energy. ऐसा नहीं करके नहीं. Choice दे दिया है. Now you are choosing either his given every mechanism is given you this thing and awareness है, education है, सब चीज बता दिया है, उन्हें कैसा अटैक कर रहा है. तुम्हारे choice है, either you connect to that
or you connect to me. Choice is yours. Choice is yours. अगर तुम्हें लग के तुम्हारा विल को सरेंडर करके मुझे करने लगा, आई एम गोइंग टू गिव दिस थिंग. So there is a different dynamics out of that. जाएंगे तो नहीं करना था, कई को पैदा करे, हम दुनिया में नहीं बैठना था, आदम हवा को नहीं खाना था, वो खा करके हमने प्रॉब्लम है. There are various questions. These are larger design. If you see from different perspective, and out of His mercy to say, He would have left us as it is. That's the different. He sent the prophets to guide you, to save you. My concluding question wasn't that. The concluding question, at the end of the day, see, if 90% is going to hell, only 10% is going to heaven. So in that case scenario, Allah. The question is, when Allah is declaring, most of them are going to deny submitting to the will of Allah. That's all. Right. Who's chosen? Listening to Satan. Who? That's all. You only chosen. That's all. There's a choice is there. It does not mean Allah created fashion and ultimately Allah knows that 90% will not submit to Allah. So that means Satan, whatever he challenged, he is going to. चैलेंज करने का भी चैलेंज करना है उन्हें खुद भी लेके बाबा what Allah said, those who connect to me, He has no power. And Allah created you to connect to whom? Allah. पहला इसमें कनेक्शन किससे था? अल्लाह से, है ना? You're born connected and Allah is asking you to maintain. That's how He says. Now there is certain energy, certain force which is taking you out. And Allah is guiding you how to save yourself and how to protect yourself and to connect. But नहीं है, क्यों नहीं मानता? वो सब चीज़ें और तुम्हारे कुछ we go into very detailedly basics, fundamentals को पूरा जानेंगे, तब जाके दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, क्या चीज़ है, अब ध्यान देंगे. शैतान क्या है हमें अभी नहीं पता. मैंने बोला कि शैतान में से any evil force, energy है. Okay, now let's see, just to get the recognition of shaitan. Now Allah commanded to surrender. Sajda karo. And He gave a command to go. Because He got the freedom. Angels have no freedom of choice. So samyana wa tana. But samyana wa tana, they surrendered, and the angels' way of life, submission way of life. They took path of submission. तो अल्लाह आदम को बता के भी देखो सबमिशन पाथ वे ऑफ लाइफ एक आया, एक और एक आया है पाथ है, उसमें जिन में भी सबमिशन जिन भी हैं करे होंगे, एक भी एक दो. नाउ देन खत्ता करो, इन्हें नहीं करा. Then you have the choice. Okay, whatever it is. Now the question arises, he did not go. Then Allah asked the question, why? What did he reply? मुझे आपसे बनाया ऐसे Arrogance is the ultimate attitude. See, of in cause and effect. See, let's always be cause and effect. Effect कुछ आ रहा है. Arrogance comes from where? Internal. My Sadath to something. So I'm coming from that. My class, my Khandan is superior. Then only arrogance is coming. Arrogance is an effect. So people are always going to the effect. या पूरा का पूरा इस्लाम को effect में डालना नहीं. Quran talking about cause. So इसमें जाएंगे. Okay. Now उसमें जाएंगे समझाना. Now the question. उसके डिटेली हम जाते हैं अभी. अभी for short time. Now Allah said to both. He should have bought. He had a choice. No, he refused. So then the question arises now for me is, he listened to whom? भाई बोलता है बेटा पानी ला, नहीं ला. तो अल्लाह की सुना या किसकी सुना? अपनी सुना. अपनी का किसकी सुना? माइंड की सुना. अब माइंड जाके उसके डिटेल जाएंगे क्या चीज है. ना आज पूरे इंसान किसकी सुनी? तुम अपने आप में तुम्हें कर ले रहे या इसलिए अल्लाह ने बता दिया कि ये दुनिया
आसमान और ज़मीन में हर चीज़ मैं मालिक हूँ, मैं ज़मीन हूँ, मेरा पूरा का पूरा who am I, the creator? He has defined everything is mine. You came from me, I created you, you are coming back to me. Surrender to me and you live a life of this one. And the consequence of you denying my command is this. It's not a punishment, consequence. अब तुम्हें मेरा consequence नहीं सुने तो बाहर जाओ, out. Everything is a consequence, is it not? It's nothing of punishment नहीं. ये चाहता है कि काश अल्लाह उसी वक्त पर उसको खत्म कर दे हमारी जिंदगी। उसी वक्त जन्नत में जाते नहीं हैं. See, question is that the purpose of नहीं. The whole purpose of design of human, this world would have never come into existence. Actually, it is basically in the design itself, as you say. Because Allah knows that Shaitan भी सब होता है बल्कि नहीं. Allah knew everything before. यूं है अल्लाह नोएगा बराबर, because that is the freedom that he does not interfere in it. See, he gave you the freedom. He's not interfering there. He's not forcing you. He's giving you the chance and also guiding you also. देखो ये ऐसा सब है. देखो सुने तो ये चीज़ों तुम्हारा ये रास्ता है. देखो सुनो मत, जाओ मत. ये दुनिया ऐसी नहीं है. दुनिया is temporary. आखिरत से totally he's giving you, showing you clear picture. Knowing everything, you deny everything. अब क्या करना? मतलब माइंड की सुना तो क्या है? What is it actually you are? Now today everybody should have a mind. I am independent. मैं तेरी के कुछ independent. मैं तेरा तू पटा मैं तुझे सुधा कर. ये क्या है? ये गाँव का खेला वाला. मैं क्यों करूँ? बीवी के पाँव तो मैं वो होम के नीचे चलना मेरे. आना टुकड़ा मैं आज हमारे मुसलमानों में मैं है मैं फना है. So surrendering what? Surrendering what? He did not surrender his mind. Now Allah has sent you Nabi, Prophet, books, everything. Surrender. Submission to the will of Allah. Surrender to the will of Allah. What is that you have to surrender? Surrender what? The mind, not the mind. मेरा देखिए मेरे बस में से इसको मार के 4 टुकड़े करवा दूँ नहीं कर सकता मैं, because अल्लाह का बेंचमार्क है. I cannot do that. मेरा चेन हो गया. I can step in and पूरा तबाह कर दूँ. मैं अब मैं क्या आ गया? Yes, Allah says you want to live. अब मैं जो है क्वेश्चन आ गया. now here again is now the time पूछा आपने. कौन पूछा? अल्लाह ने because of whatever it is, because दुनिया है दिल दिया time पूछा. They don't punish me or consequence immediately deny because he broke the law or he divine law को break करा नहीं करा. See, the commandment is everything is mine, created, everything is mine. मेरे को कोई भी break करे law is a consequence. Anywhere you keep that consequence, is it not? घर में भी consequence. नौकरानी में भी consequence आते हैं. ऑफिस में भी तुम्हारे consequence है नहीं है. Allah says, break it, don't break the law. If you break it, there is a consequence. And he knew that he broke the law, the consequence would have been given immediately. Then he said, don't punish me or don't give the consequence immediately. Give me the consequence. And he's not defending, नहीं देना करके भी नहीं, argue भी नहीं कर रहा. He's accepting the consequence. See, he's accepting the consequence. He's not pleading, please forgive me that give me. No. Adam al-Islam pleaded. That's why Adam का story को अलग बात पता है. He said, I accept it, but not immediately. Okay, give me the. Now, when he gave respite, when जब इंसानों को तुम तुम्हारा जिंदा करके जजमेंट भी आएगा, उस वक्त मुझे भी उनको भी इंसानों को जब अंगार में भेजेगा, उस वक्त मुझे भी पनिश देना कॉन्सिक्वेंस. इन रियलिटी अब सोचने जाए तो क्या मांगा उन्हें? Just think that what did he ask? Time. Time is just see again. Time is. He never wanted to go alone. He wanted to take the entire
You wanted to make it. Therefore, just think. Punishment से दूर. See, the question is just look here. Don't immediately give me the consequence. Give the consequences in the end, when men are being decided. So then what did he ask? दुनिया. What? दुनिया मांगा. दुनिया मांगा. आज क्या मांग रही तू? दुनिया मांगा. उसको मालूम है मुझे मुझे राज करने दे दे. आज सारी दुनिया कौन चला रहा है? साइकोपैथ चला रहे हैं या कौन चला रहा है? हक पे जो भी खड़े दुनिया में हक वास्तव में खत्म करते हैं. वो स्टैंडिंग फॉर ट्रुथ एनीवन स्टैंड. अब हमने जो काम करे 25 साल से आज हमें मुसलमान में क्या मांग रहे? अल्लाह बोलता है ये दुनिया सबको देता जा मैं. तुम क्या मांग रहे? मांगो तो वो मांगो, अल्लाह को मांगो. जब अल्लाह मिल गया तो सारा चीज मिल गया. लेकिन अल्लाह को छोड़ डाले हमें, दुनिया के पीछे भाग रहे. थोड़ी थोड़ी दुनिया के लिए इसे खत्म कर रहा हूँ. थोड़े पैसों के लिए दुनिया कर रहा हूँ. आज मुसलमानों की क्या नहीं करता इन योर लाइफ. किधर है पापा इन योर लाइफ? किधर है जिंदगी? That's what I mean. If Allah is there, सारी दुनिया सब कुछ मिल जाएगी तुम्हें. अल्लाह ने इतना क्या मिला? You may be a billionaire and you have achieved everything in life, and you never got Allah. What did you get? यही तो है. जब अल्लाह मिल गया दुनिया ले ले, कैसे भी रहते दो वक्त एक क्या जिंदगी रहेगी, क्या ऐसे है, कितना जिस्म है, कितना खाओगे. आज है तो कल नहीं है. This is funny. Allah is reminding you, this is nothing, this is anytime. So as Muslim, what do you want? क्या चाहिए? क्या चाहिए? इश्क़ खुदा. अल्लाह. एक शेर याद आ रहा है. जी फरमाइए. जी जोर से बताइए. इसके आगे जी. गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर इकबाल. गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर इकबाल. गिरते अगर इश्क़ खुदा में तो कोई हसरत अधूरी न रहती. वो शेर आज प्रैक्टिकली मालूम हुआ. खाली स्टेज आपने बोलने के लिए भैया वो इनको मिला. See, getting is different, understanding is different. This is where we are getting Allah in your life. Now you got it. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा महबूब मिल गया. वो मिल गया तो सब मिल गया. भाषा मिल गया तो सब तदती मिल गया. भाषा छोड़ के तुम क्या मांग रहे? मुझे ये दे दे, वो दे दे, औलाद दे दे, पैसा दे दे, शौहर दे दे, क्या दे दे? लेकिन ये शेर कंटिन्यू करती है. ये दुनिया में जो है अब ऐसा है चलते चलते कि कहाँ तक रुख बदलते जाए कश्ती का. जी. कहाँ तक रुख बदलते जाए कश्ती का. जी कहाँ? वही तूफान उभर आया जहाँ साहिल समझ से. That was the real heart-to-heart conversations and that आज कहाँ है? एक शेर पूरा का पूरा फलसफा पूरा अल्लाह को लगाता है, इश्क़ लगाता है. That was the culture and the language we had. आज क्या है? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जी? चाहिए तो कौन चाहिए? तब अल्लाह मेरी जिंदगी में आना है. अब उसके लिए आना है तो किसको दूर करना है? किसको निकालना? शैतान. That's what either you are connected to Allah or connected to शैतान. अब मैं वही कहा, that's what my Holy said was,
अरे भाई शैतान शैतान ये कहाँ है, शैतान किधर आया है, अब किसकी सुन रहे हैं, क्या बोल दिया तुम्हें, अरे ये सब क्वेश्चन लग रहा है, ये पूछे क्वेश्चन, ये सब होने के नहीं. So what is that? Mind is talking or you are talking. Mind is creating doubts and so now question is now, अब इसमें जब जाएंगे कि हमारे अल्लाह ताला ने 3 इंस्ट्रूमेंट्स दिया है, फैकल्टीज दिया है, 3 फैकल्टीज आई कैन से इंस्ट्रूमेंट टूल्स वगैरह. एक है जिस्म, बॉडी, फिजिकल बॉडी इज व्हाट is the 5 senses and the brain. That is the physical part. That is only the input. Eyes, arms, and input है ये. There's nothing else. That's all that is. And I got the mind दिया है, दिमाग दिया है, mind. And then there is the heart. ये 2 processes बोलता हूँ मैं. One input process. अब ये input किसको डाल रहा है? Which processes जाता है? So there is Allah saying. The heart is where Allah, Ruh is where in the heart, and all the good is from me. All the evil is created substandard. Evil from the perspective of Allah is evil. Dunya के इसमें evil from the perspective of this world or from your perspective may not be. We are always talking from the perspective of Allah. Evil. Evil is what? Shaitan is what? Evil is what? Shaitan is what? Mind is what? Again. Is independent. Freedom means independent. Mind to छुपता नहीं. So it means I'm not going to rely on Allah, not going to surrender to Allah. I want to live my own life. अब मुझे तो बना दिया, freedom दिया, मैं मेरी मनमानी की दुनिया में जीता हूँ मैं. जो दुनिया जैसे जा दुनिया दे लो तो मैं आखिरत नहीं कर गया. If you want to live your own personal life, जी लो. There's nothing bad, wrong. गंदा wrong नहीं है ये. Live, but what is your anjam? That's why he's showing you. Evil is what from Allah's perspective is living an independent life is called evil. मेरी मर्जी के मैं छुपता नहीं, मैं मानता नहीं. That means I'm going to listen to what? मेरा मन जो चाहता है, मैं जो चाहा, मेरा दिमाग चाहा, मैं जैसा करता हूँ, मेरी जिंदगी, मेरा पैसा, मेरा मैं तेरे बाप के पैसे लेके आ, मेरा पैसा. The languages we use. I. That is evil from the dunya perspective. Is not evil. Today, Western में I is the most important thing. That's all the motivation speakers of I को develop करते हैं. खुदा से कनेक्ट नहीं करते. Now I got how many things? 3 instruments. Which are the things? Body, mind, and heart. Now, when I'm born pure, I am born pure, connected to Allah. Every child is born pure, perfect, whole, complete. There is nothing to this. That's how Allah created. And Allah is created. And then He created what? हमें कौन है? He created you as what? Human beings. इंसान बना के भेजा हमें. He created you as human beings. इंसान बनाया है. और इंसान वहाँ फित्र में पैदा किया है. With the inbuilt what? Inbuilt software. What is the inbuilt software? To distinguish between good and evil is not from the external education. समझो ये कर्म नहीं है. ये फर्क करने की सलाहियत is already inbuilt in the heart. हक और बातिल का जो है फर्क करने का, it is a software that is already inside you. Whether you learn anything, understand anything, that is nothing to do with external. It is in the heart. That is how the child came. Now what happens? Now as the child grows, connects to where? क्या यूज करता है? So now the question is child है. Now, am I the body or do I have the body? I have the body. Yeah? I have the body. I have the body. That means the body should be under its control. I. Who's the I? Let's see. Now, am I the mind or do I have the mind? I have the mind. So the body and mind. And what connects me to the external world? No, external world goes. The body and mind. See, with the external body, I'm seeing the girl listening out there. When I say, judgment कर रहा हूँ, mind use कर रहा हूँ.
and using the mind to survive exist. Using the mind, but God gave me the mind to use it. The mind is running your life, or you are using the mind. When you surrender the mind is under you, and you use the mind and to become billionaire, become a scientist, become anything. Mind using you is different, you using the mind different. Now what connects you to the Allah? What connects you to the Allah? Heart. तो हमें हर इंसान कितने दुनिया में जी रहा है? हमने बोला तो अभी लिविंग है। कितने दुनिया में जी रहे हैं? दो कुछ दो, एक जाहिर एक बातिन, एक्सटर्नल इंटरनल। External connect me to what? As a child grew, totally environment, society, पढ़ा के पूरा का education system मुझे connect करने किससे कर रहा है? To survive and exist. तो mind से connected हो गया, body physical, तो मेरा पूरा focus human part में focus है, priority है या heart का priority है? Human. ख्वाहिश का, जिस्म का, ड्यूटी, खाना पीना, पूरी दुनिया में देखो, मॉल्स देखो, क्या 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 चीज़ें अपने जिस्म के लिए खाने के आयार रेस्टोरेंट, everything you are spending money on your body, and then your mind, you are using education system, mind की चाला कैसे कैसे बनाओ, कैसे करो, इंडिपेंडेंट कैसे मेरा बनाओ, हर आदमी भाग रहा है रेस में, कि मैं रेस में फर्स्ट आ जाऊँ, इसको कैसा बीट करो, उसको बीट करो, तो सारी जिंदगी क्या हो रहा है? Where is your heart? Where is Allah? Where is things? Nothing. Then ये दिल लेके अब ये उल्मा सब तुम्हारे बोले ये नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, दाढ़ी रख लो, ये पहनो, ऐसा पहन लो, ऐसा पहन लो, वैसा पहनो, ऐसा पहनो, वैसा पहनो, वो कर लेके तुम जा रहे, लेकिन रेस किसकी है? अंदर कौन है? मैं कैसा भी रहा हूँ, तो क़यामत किधर है? अल्लाह किधर है? जैसे बच्चे की बोलते हैं प्रोग्रामिंग उसका वैसा हो गया। बच्चे की गलती नहीं है, because this is how the whole system has put you to. But Allah sent us the book, the guidance, and made us to connect to the heart. इस्लाम के एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने कर मनाफरत की उसकी अगर मेरी चाहत है, अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को उसमें जो मेरी चाहत है, मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। बिल्कुल। अगर तू मुखालिफत की उसकी जो मेरी चाहत चाहते तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। बस ये एक ही बस है, बिल्कुल। दो चाहतों की जंग इधर, एक अपनी और एक उसकी। वहां से शुरू हो गया, आदम दो बेटे पैदा होते ही वहां से शुरू हो गया, मैं इससे शादी कर दो, आज तक वो जंग है। वही जंग है। So freedom of will दिया है, the mind दिया है, एक you got the शैतान does not mean that जिन्ना है उनके पास है, माइंड I call it mind की सुन रहे हैं। आज बच्चा और तुम्हारे बच्चे हैं, किसकी सुन रहे हैं? पूरा मोबाइल ऐप पूरा माइंड से कनेक्ट कर डाले, तो अल्लाह किधर है हमारे जिंदगी में? Just some doing religion है, just to satisfy your ego. मैं नमाज पढ़ ली, रोजा रख ली, अल्लाह मिल जाता है, अल्लाह दुआ कबूल कर ले मुझे, वो कर ले, ये कर ले, इतना ही होगा। How do you know? But whole life you are living whose? तो क्या करना? What is the first most important thing? Tell me now. Shifting or doing? Shifting and doing. नहीं पहले first primary क्या है? Shift हो गए तो naturally shift अल्लाह से कर दो. So when you connect to Allah, Allah is good. If the seed is good, what will be the fruit? And when the evil से connect है तो अंदर तुम्हें external क्या होगा? And that is what it is called. ये दुनिया में मुसलमान गुड को कनेक्ट करने आए या evil. Muslim is one who benefits others. We are खैर उम्मा. आज खैर है या शर है? then किससे कनेक्ट नहीं सर? Where is Allah? कर लो बोल रही है सब, कर ले रही हो,
good. Yeah, when I connect to Allah, Allah says, मैं तेरी आँख बन जाऊँगा, मैं तेरी जुबान बन जाऊँगा, तेरे कान, मेरा हाथ, पैर। तो क्या हो गया? Then life becomes worship. मेरा देखना इबादत हो गया, मेरा बोलना इबादत हो गया, नौकरी करना, जॉब जा रहा हूँ मैं, किसी को मदद कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, you are always there benefiting everyone. You are not thinking मेरा क्या होगा. Never ever you think of I. Everything belongs to Allah. Nothing is mine. So where is it? So am I detached to the dunya or attached to the dunya? Detached. Detached. That is kalpana. That is no, when you detach, you get attached. ये दुनिया से जो अटैच होती है तो अल्लाह से डिटैच हो गई. ये मेरा, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा जेवर, मेरा माइंड, माइंड, मेरा, मेरा, मेरा. क्या लेके चल गए सब जने? क्या लेके चल गए? सिकंदर आजम का लेकिन ये भी नहीं लिखे गए, लेकिन आखिरत कहाँ मिले? तो अल्लाह से कनेक्ट होना तो क्या होना है? फर्स्ट डिटैच होना. dance from the world. डिटैच ऐसा नहीं कि जंगलों में बैठना नहीं है, हमको नौकरी में रहना है, बिजनेसेस खोलना, 10 बिजनेस खोलना है, मिलियनर बनना है. बट हाउ आर यू गोइंग टू वर्क? बाय डूइंग योर माइंड चालाकी, मक्कारी, होशियारी करके, या यू गोइंग टू पुट योर एफर्ट एंड डू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्क एंड यू मेक मनी. And are you going to spend all the thing on your own self? You will not, Allah का है. Then you will be able to make benefit. जॉब दे रहे हैं तो खुद दे रहे हैं. तो ये खैर मुसलमान क्या हो गए? आज ये मुस्लिम कंट्रीज 52 कंट्रीज आर देयर सर. Where is it? Sir, but इंसाफ हो रहा है, ना इंसाफी होती है. in today's complex situation, आज का जो complex situation, what would be the steps to master it? ये What towards would be the steps to master this and master that's why from the self, sir. The self individuals make society. That is what Allah is saying. You want to change the world, change yourself first. अगर तुम्हें चेंज नहीं हो के दूसरा को चेंज नहीं हो, सब आलिमा हो, सब बात चेंज करो, दुनिया चेंज करो, मैं करो. Now we are running a whole life we are spending to change others. Like nobody to change. Change yourself. When I change, then my change comes where? Impact comes where? as Outside a family first? affects everywhere, wherever you are. So what do you want now? What do you want? Conclude करेंगे. क्या चाहिए? Shift. To where? To whom? Allah. तो अल्लाह आ गया तो अंदर क्या हो गया? और कब होगा? अल्लाह कब आएगा? अंदर. तो मेरा पूरी जिंदगी में then Allah become my benchmark or mind. I'll use the mind to do the work. अब यहाँ से mind use करेंगे कैसे जाना? अरे भाई ऐसे ट्रैफिक है उधर जाएंगे. अरे कब बिजनेस को जाना है तो you are using the mind to do. Is it not? ऐसा नहीं कि माइंड से डिसाइड कर लेंगे या खाली वो करेंगे. नहीं, that's not only using the mind. Again, now when you connect to Allah, how you use the mind? How you use the mind when you connect to Allah? When you connect to the good, how you use the mind? For the good purpose or the evil purpose? Good purpose. अपना दिमाग अच्छाई कामों में लगेगा या बुरे कामों में लगेगा? अच्छे काम. And that is ibadah. When I connect to shaitan, when I connect to myself, then I will be using the mind for what? Evil things. How to dupe you, how to this one, how to wag you, how to speak to you. How to cheat. तो आज मुसलमानों की जुबान उसी जुबान है. प्यार मोहब्बत किया अगर हमें सब कैसा लगे तो are you going to practice certain things? Really? Inshallah means no. I am not going to do Allah चाहा तो. First you should declare, no matter what, I will do it.
then Allah support. Allah helps those who have done so. Unless you are not committed, Allah is not going to help you. You are misusing inshallah. So let's do. दो तीन चीज़ें दिखाता हूँ अगर कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है and it is so simple, so easy, and because it is so simple, so easy, the mind will not accept That is a trick. because it wants complication. Okay, now let's see now. Let's go back. बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ. नहीं मैं वो बस देख रही हूँ. देखो कभी बैठ जाओ प्लीज. Now let's see now very simple चीज़ों पे जाएंगे. इतना एक दो चीज़ आ रही है. First thing is Allah created me what? Allah क्या बनाया मुझे? जी? इंसान. अशरफुल मखलूक अल्लाह. ध्यान को. यानी we claim whatever it is. Human being. Then the position. पानी जी. Yeah. So who am I? Who am I? अशरफुल मखलूक. No, I'm sorry. Human being. Acceptable means God gave the freedom of choice. And the best of the creation out of choice, you're willingly surrendering to will of Allah. It's a very big position, that's a different level. Which one? Human being. That's all. Now I am a human being, then you are all who? To be someone. You? Not family, sir. I am a human being. पूरे के पूरे इंसान 7 billion, 8 billion पूरे लोग कौन? All from one human. I mean, whatever it is. I am a human being. Who are you? That's all. This is the law. Law of equality. First thing, basic equality is this. What is it? Equality. What is law of equality? Equality is not in the external. External में equality हाँ ही नहीं सकता ना. You are my servant. You are my slave. I am my wife. बड़े छोटा पैसा. There is cannot be an external equality. Equality is internal. So I mean, 7 people are equality. Law of equality is. So that means what happens now? Equality means what? See and treat everybody as human being. Irrespective of the religion, External का छूट दो सारा. हिंदू की, काफिर की, इसराइल की, जू की, हिंदू की, मोदी की, सब चले पर क्या आज हम हर एक इंसान को इंसान जैसा देखते नहीं देखते? बाहर तो देख लेते हम. जस्ट नाउ वी आर ऑन ह्यूमन. अब घर में जाती है तो मैं अंदर जाती है, बच्चे पूरा गंदा कर कैसा देखती है? What do you see? How do you see one son to the other son? In the office. So what happens now? Are you going to practice this? What is it? Definitely not. Whatever it is, तुम्हारा जिंदगी. It's your life. It's your life. So when I see and treat every human being, पीछे से जाके कार ला को मारते उसको कैसा देखते हैं? बोलो ये अब निकल के नीचे जा रहे हैं. तुम्हारी कार के सामने पीछे कोई पार्क कर बैठा है, कैसा देखते हो उसे? Bad man. This is where it is. कल को reality क्या कहेगा? Reality से. I'm not saying not to get angry. I'm saying so when I say everybody as human being and then treat them as human being, what happens now? What is the now? What is the outcome? This law को practice करके क्या होता है? Respect, cordiality, Respect. love. So the other person's response depends upon my response. So I want to change you. I want you to treat me as a human being.
So what is the process? सबसे पहले खुद को चेंज करना होगा नहीं मैं बताओ मैं तुम इंसान जैसा बात करूँ तो तुम इंसान जैसा होते एक चुवाइट तेरा बाप तू चुवाइट क्या मुझे बात करता है? This is natural. Law of reciprocity. Even the small child को फिर बोलते बच्चों को इज्जत नहीं देता because you are doing that language. So as Muslim का यही basic Allah Ta'ala and Allah said no Arab superior, no white superior, nothing superior. आज ये हमारा मुसलमान equality की law है या नहीं है? Then what happens? It's not so easy to practice, sir. And now who's telling sir? मारो उसको, मारो उसको. Every time you get this. Who's telling? And he will never practice, not that it is not, I know it is difficult, sir, but it's not impossible. Yes, I will fall down, I may get angry, but I can come back. I'm not saying that I am an angel or something, sometimes it happens, that also I'll tell you, So, इसमें what is the experience now? What do you experience? What do you Peace, experience? no resistance. It's No resistance, then what do you Acceptance, experience? harmony. Whatever acceptance, just what do you experience inside? Peace, calmness, Peace. What do you want? happiness. What do you want? What do you expect? Now inside it is pure or impure. Pure. Process one. That's all. That's difficult, but answer. होना बोल process. पाक होना pure होना में बराबर पागल है. अब वो So he's not willing to do that. He wants to keep it pure. क्या हो रहा है मेरे दिल में क्या है? पाक. I'm not. Though I don't like your behavior. I don't like your actions. See, ये हरकतें करे तो तमाशा खाएगा तू. समझ में आ गया? हाँ? I'm not insulting him. The way I attack him is तुम्हारे माँ बाप ने तमीज़ नहीं सीखा. क्या आप घूर के देख रहे हैं? उस्ताद कैसा देख रहे हैं? नीचे मुंडी करके बैठते हैं. आंख में आंख मिलाते हैं उस्ताद को. So what am I doing? Equal, unequal. अभी ने क्या बोला? हमारे बेटा ना अंदर मशीन चलती है. क्या दिखाता हूँ मैं? I can't remember. I will show him every dog in the day. आज कर लो. मेरे सबके सामने ही इंसल्टेड में पॉइंटिंग आया. दिखा मैं दिखा दिया. मैं कौन हूँ बताता हूँ मैं भी. हंस आपको फिर दुबई में खत्म रखने नहीं छोड़ता. This is how it is all. Revenge. So you want purity inside? Then actually you can tell me I don't like this dress, I don't like the way you behave. Is it not? तेरे बच्चों को भी बता सकते हैं बेटा ये I don't like it. You Mama I love you. You want this or this one? This is this one. I can't tolerate this. Others I get angry and say कितने बार बोलना तू भी ऐसा तेरा बाप भी सच. We go to and all that. We go and everybody, no, equal. So what do you experience? Are you pure, not pure, sir? Yeah? No or no? Yes or no? The mohabbat hai nahi hai. When I am pure, equal, so what is there between you and me? What is there between you and me? Love. Yeah? Love. When love is there, who is there? Allah. Allah is al-Wadud. So Allah, you brought Allah in the life. Allah को दोनों के बीच में लेके आ गया, प्यार आ गया, मोहब्बत आ गई, तो अल्लाह की रहमत आना शुरू होती है. Now question, this is one part. Now who broke the law? Who broke the law? Shaitan. What did he break? Equality. Breaking the law is what? Equality. What is breaking the law? He is superior. जी but when disobedience again affect कुछ आ जाएगा. But this is where everybody पूरा आदमी disobedience करा हुआ था. Now there is an effect.
He broke the law, he did not break the law. What is the breaking the law? What is breaking the law? क्या breaking the law? नहीं, breaking the law. This is shaitan. अब now this is what I'm saying. Who shaitan? What shaitan बोलेंगे तो law breaking. Means breaking the law is I am better than you. That is shaitan. The moment I see you, no, in any sense, एज के लिहाज से मेरे बाप तू बाप, हाँ? What is it? So now how do we see each other? Equal and equal. Equal. Now how do we really practicing equal and equal, sir? Hypocritical. बच्चे में, घरों में, हर एक को कैसा देख रहे हैं? एक दूसरे को घर में, see the family. माँ बाप एक बहू को, एक दूसरे बाप को, एक बेटी को, उसको, एक भाई उसको नहीं लाया बेकार कर तो कैसा देख रहे एक दूसरे को? So when there is unequal, what happens? The moment I look low, even the same mustard seed, यानी क्या? राय के दाने के बराबर भी, if I think I am little superior than you in any sense you can call. In the physical or externally or spiritually, मैं नमाजी तू नमाजी नहीं या दाढ़ी मेरी तेरी नहीं है, in any sense, I have proven there is impurity in your heart. Allah will never come inside you. लेकिन आज हमारा कैसा हाल है? कैसा देखते हैं सीनियर को, जूनियर को, ऑफिस में नौकर को, उन्हें बोले लाके नहीं दिया उन्हें. Somebody who comes in front of you in the mall में. Are we Muslims? Are we connected to Allah? Is Allah in our life? Or shaitan? You know Allah. शैतान है तो क्या रहेगा हमारे दोनों में? मोहब्बत, प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगा. हस्बैंड वाइफ इक्वली नहीं, अनइक्वल, दोनों में मोहब्बत प्यार ही झगड़ा है. आज 3 महीने में, 2 महीने में तलाक हो गया. Nothing wrong, bad, nothing. But I have छोटे छोटे चीजों को तब ऐसा कर, अगर मैं तुम्हें नीचा देखे, I am seeing you low, am I committing the sin or you are committing the sin? अब एहसास ही नहीं है, गुनाह मैं कर रहा हूँ सर. ये अल्लाह का बंदा है, ये देखने में जंगी दिख रहा है, भेड़िया दिख रहा है कि गंदा दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसके? अरे क्या बोला, शराब पीता शराबी का You may be much closer to Allah than me. Who am I to judge you? I'm seeing this, I'm judging. Behind what you are, how am I? कैसा जज करते हो? उसको देखते हुए नमाज पढ़ा कैसा देख जज करते हैं? उसकी दाढ़ी देखिए जज करते हैं, उसकी कार देख को जज करते हैं. आ गया. Now what happens in this, especially औरतों में देखो, फिर बोलते सुकून नहीं है. खान साहब सब नमाज पढ़ते हैं, मैं कभी कोई सुकून नहीं, कहीं कोई सुकून नहीं. नीचे कैसा देखती है दूसरे को? तो मेरी अल्लाह इन योर लाइफ सर, डू यू वांट अल्लाह इन योर लाइफ? शैतान आएगा, शैतान अल्लाह. हम देखिए अल्लाह से कनेक्टेड हुए, हमें अल्लाह से बना है. अब कौन डिस्कनेक्ट कर रहा? हु इज डिस्कनेक्टिंग? बाय सेइंग दैट जन्नत में पैदा किया है हमको रहने के लिए. कहाँ पैदा किया है? अल्लाह ने इंसान को पैदा किया कहाँ रहने के लिए? जन्नत में रहने के लिए. अब जन्नत से आदम हवा को कैसा निकाला? कब तक थे जन्नत में आदम हवा? Till when they were there in Jannah. Now it's touched again. You go into the effects. This is the whole problem with this mind. यही पूरा तबाह कर दिया सर. See, cause and effect. What is the cause? Till when they were there in Jannah. Anyway, want to be close now. Till when they were there. Disobedience. Nice, sir. That is a cause, sir. Action which is there. This is where पूरा का पूरा इस्लाम है. जब सोचे कि चलो Till they listen to Allah.
अल्लाह ने कहा ये दफ के करीब नहीं जाना, इसका नहीं खाना. So as long as they listening to Allah, they were in Jannah. Not ये एक्शन लेके पूरा का पूरा इस्लाम को लाके एक्शन में डाला लेंगे. इंटरनल शिफ्ट इन इंटरनल की बात ही नहीं करेंगे लोग. करना नहीं करना, गलत करिए करे, तुम्हें भी डिसोबीडियंस नहीं करना बोल रहा है. Now when did Adam came out of the heaven? When he stopped. When, sir? Stop listening Allah. Not stopped. Again, don't go there, sir. He listened to them. Bola! Listen to whom? Shaitan. And he started. क्या बोला? ये अल्लाह बोला कि ये धोखेबाज है, फ्रेब है, झूठा है, मकार है, उसकी मत सुनो, इस क्लियर एनिमी. लेकिन forgetfulness में लाया. Another name of shaitan is forgetfulness. बोला था. That's why you forget and get into it. They forgot. And then they said, okay, क्या बोले? चलो सारा खा लेंगे, मजा चख लेंगे एक बार. That's how they fall into the trap of drugs. Anything difficult है. He said. Now whatever that mind is saying, are you testing the reality? Next level जाते हैं हम उस पानी की तरफ. So now everyone who's stopping you from listening, don't listen to him. आज 24 घंटे किसकी सुनता है?